एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज थॉट कि अगर आरबीआई एक ऐसी अथॉरिटी है जो मनी प्रिंट करती है हमारे कंट्री के लिए, सो वाई जस्ट कांट दे प्रिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी? आई मीन वी ऑल विल बी रिच एंड द इकोनॉमी वुड ग्रो सो हाई. It would be such a great situation. And trust me, this is not just my belief or my misconception. Most of the people have this as the doubt or as a misconception. But if you're here, you have reached to the best point, because in this video we are going to discuss about the very basic example जिसके थ्रू आपके mind का ये doubt तो आराम से clear हो जाएगा. And we'll also move up to the major macroeconomic parameters जो कि actually इफेक्ट होते हैं और कुछ ऐसी instabilities जो ना अकर हों, and इसी वजह से RBI ऐसे steps नहीं उठाता है. So this video would be a very simple yet a very descriptive manner of telling or of explaining this very basic conception or misconception which people have in their minds. So let's get started. To explain this concept in a very descriptive manner, I have basically divided the video into 5 major stages to explain this concept. The very first is of money supply. Now, what does money supply means? It actually means the total amount of money which is circulating in the economy. अब ये money किसी भी form में हो सकता है, either cash, demand drafts, deposits, anything, right? If we go into a bit technicalities, then money is divided into 4 parts, which is M1, M2, M3, M4. Maybe we can discuss that someday later. But today, this is the form where money is in the economy, और इसको obviously हमारे देश का central bank, which is RBI, ही control करता है. अब RBI के पास monetary measures होते हैं या monetary policies होती हैं जिसके थ्रू वो इसको बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. हमारा क्वेश्चन ये है कि वो इसको बढ़ाता क्यों नहीं है? Why can we all not get a lot of money? Now, to understand this, we eventually come up to our next stage, and that is the main problem, the problem of demand and supply. Now, this is the very important concept. I will explain this with a very simple kind of an example, and then we'll relate it to the actual macroeconomic policies. Let's get started. Let's start it with a very simple example. Let's say that there are 10 pizzas. So the supply side is actually containing of 10 pizzas. And everybody in the room who is demanding for those 10 pizzas has a total income of 1000 rupees. तो इसका मतलब बेसिकली यही निकलता है कि एक पिज्जा की कॉस्ट रफली 100 रुपीज हो गई. नाउ इफ आई अज्यूम माई सेल्फ एज अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग मनी, अगर मैं उनकी जो टोटल इनकम 1000 थी उसको डबल कर देती हूँ, यानी कि 2000 कर देती हूँ, तो इससे और सप्लाई साइड हमारी सेम है, यानी कि अभी भी हमारे पास 10 पिज्जाज ही हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन? The price of those one pizza, which was earlier 100 rupees, now has surged up to 200 rupees. Whereas the quantity which would be given to the people demanding for it has not increased at all. Only and only the one thing which has increased, that is the price level. And this is the exact problem, my dear friends. होता क्या है हमारी इकोनॉमी में, जब हम एज इंडिविजुअल्स अपनी डिमांड बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ हमारी वेजेस से, यानी कि हमारी इनकम से या फिर मनी से. वो कहाँ से आता है? इफ लेट्स से आरबीआई स्टार्ट्स पब्लिशिंग और starts printing a lot of money, what will happen? We'll get more money in hand. Getting more money will increase our demand, बट हमारी सप्लाई अभी भी स्टैग्नेंट है. सप्लाई एकदम से तो बहुत नहीं बढ़ जाएगी ना. सो सप्लाई इज सेम बट डिमांड इज राइजिंग, एंड दैट वुड लीड अस टू अ सिचुएशन ऑफ प्राइस हाइक एंड इवेंचुअली कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विच इज ऑफ इन्फ्लेशन. दिस सिचुएशन एक्चुअली लीड्स अस टू इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन को ही हम सरल भाषा में कहते हैं महंगाई. और ये महंगाई कभी कभार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंट्रीज के लिए इसको एज अ बहुत ही बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरह देखना पड़ता है. सो नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट इन्फ्लेशन अ बिट मोर इन डिटेल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं इसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं, अगर आपकी सैलरी डबल हुई है लेकिन मार्केट में प्राइजेस भी डबल हो गए हैं, so basically it just nullifies the effect and there is nothing in profit you're getting out of it. And this is the exact problem. Inflation is nothing but too much money chasing for too few goods, which is the demand is a lot but the supply is limited, and that is the problem. और यही से हम अगर इसको थोड़ा सा और एक मैक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम जीडीपीज के भी ऊपर बात कर सकते हैं. जीडीपी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ जीडीपी, विच इज वन इज नॉमिनल एंड द अदर इज रियल. The real GDP is the actual one which we have studied throughout our books and everything, and the theoretical concept, which is the total amount of goods and services produced in the domestical boundaries of the country.
अब ये तो हो गए कि ठीक है, ये तो हमारे एक्चुअल जीडीपी है, लेकिन जो जीडीपी हमें दिखती है न्यूज़ चैनल्स पे, जो जीडीपी हमें न्यूज़पेपर्स पे दिखती है, जिसको हम एक्चुअल जीडीपी अपने दिमाग में मानते हैं, जिसके थ्रू इंडिया इज गोइंग अप एंड इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो जीडीपी रियल नहीं है, बल्कि वो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है, द इन्फ्लेशन एट विच अ कंट्री इज रनिंग राइट नाउ. Now this is the actual problem. At times we feel that we as a country is growing a lot, and that is only and only because of the goods and services we are producing, or the entrepreneurship, or the human capital. But that is not the sole reason. The reason which otherly accumulates also, that is of inflation. So inflation भी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. This was a demarcation which I had to mention of the nominal and the real GDP as well. Now let's actually come to some major real points, and that is eventually leading up to a fourth point, and that is of hyperinflations, or I'd like to talk about certain real life based examples. मैं जब उनकी बात करूँगी तो maybe it is a possibility that you will be also recalling those incidents. बट लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन. जब ऐसा हुआ है कि कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा पैसे छापे हैं, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा मनी को सर्कुलेट किया इकोनॉमी में, एंड दैट हैज़ एक्चुअली लेड द इकोनॉमी टू अ मेजर डाउनफॉल. लेट्स टॉक अबाउट दोज सिनेरियोज. बिफोर एक्चुअली जंपिंग अप टू द रियल लाइफ सिनेरियोज, let's first understand that why does this need to happen, that a central bank out of panic or out of any situation starts printing more money. This happens usually in two scenarios. One is in a war-like situation, or second is when a country is facing a major socio-economical downgrade. इन्हीं सब situations में ऐसा होता है कि at times the central banks just print more money so that people have more purchasing power. बट उसके वजह से लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर तो आ जाती है, लेकिन डिमांड भी उतनी बढ़ जाती है. लेकिन इन सिचुएशंस में सप्लाई को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनफ कैपिटल नहीं है, इनफ लेबर नहीं है. This is the reason that supply remains very much stagnant, but the demand keeps on rising. And यहीं पे हमारा वही वाला कंसेप्ट आ जाता है कि प्राइस बहुत हाइक कर जाते हैं. At times we have seen double digits inflation in countries like Zimbabwe, Venezuela, श्रीलंका में recently हुआ था. Pakistan is a very similar case for this. And in fact, Germany also has seen major kinds of great hyperinflation scenarios during the Great Depression period and in their war kind of situations. So this is the time when people, if you see images, then that is very horrific to see at times, when people are carrying entire suitcases, entire bags just to get a loaf of bread or maybe their basic necessities. And this is the main reason that central bank cannot actually print a lot of money just by their own will. They have to make sure of many things. They have to make sure that a country में ज़्यादा inflation ना हो जाए, deflation भी नहीं होना चाहिए. So everything has to be stable. Now let's come to the actual final point of this video, and that is कि कब सेंट्रल बैंक इनको बढ़ा सकता है, कब सेंट्रल बैंक ज़्यादा प्रिंट कर सकता है. लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट दैट. इट इज़ अ बिट glimpse of the monetary policies, but I'll try to tell you in a brief manner. So central bank actually increases the money supply when they see that economy is slowing down, या फिर लोगों ने spending बहुत कम कर दी है. एंड लोगों ने स्पेंडिंग कम कर दी है, दैट इज़ अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल. बट व्हेन वी लुक एट मैक्रो इकोनॉमी, वी सी एट पीपल फ्रॉम अ लार्ज पर्सपेक्टिव. तो जब हम देखते हैं कि कंजम्पशन कम हो रहा है या फिर स्पेंडिंग कम हो रही है, तब सेंट्रल बैंक कभी कभार ऐसे इनिशिएटिव्स लेता है कि थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसीज आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. वी कैन टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियोज, आई थिंक. But through those measures, central bank actually increases the money supply in the country, and then people have more purchasing power. Now, इसमें क्या होता है कि central bank actually knows at that time that supply is enough to meet the demands, and that is why the inflation kind of situations would not be reached out in the country. Now, there is also situations जब central bank को पैसे क्रप करने पड़ते हैं public से, यानी कि when public has a lot of money, which is obviously the case of inflation, and central bank has to take that money. That is also done through the monetary policies which are by the central bank. That is also qualitative and quantitative. And through those policies, central bank takes the money out of public's hand to reduce the problem of inflation and to actually get the economy at the stable level.
Now, this is why we say that central bank or the apex institution has such a great power in the country, and indeed it has. With this, I think I have covered all the 5 stages. I've covered all the stages through which I could explain this topic in the very detailed manner, yet in a very basic manner as well, for somebody who's not of the economics background but wants to learn about this very evident kind of fact. So this was from my end. I'm sure that now if the next time somebody asks you that, hey, what do we do if we have to raise our economy or if we have to just boost our economy, you will definitely not answer with printing more money. Rather, it can be always done through increasing the human capital, through increasing the productivity, through increasing other things as well, which is the education, health, and a lot many sectors as well, and obviously producing more goods and more services. With this, I'd like to sign off with this video. Thank you so much for watching. See you very soon.